Construction of RCC design. Construction of RCC building required some of paperwork before the start of actual construction. The very first stage is preparation of drawings as per requirements of client. Once drawings are completed, approval of drawings is important. After approval of drawings from both architect as well as structural engineer, the next step is marking of plot boundaries. Cleaning of plot. Site preparation consists of clearing away the trees from your building site. This involves the removal of trees, roots, and other vegetation from the building site. After cleaning the site plot, marking of plot should be done as per drawings. Excavation. A structural engineer will be needed to determine the depth of the excavation. The depth will vary as per building depending upon soil strata. Excavation should be carried out as per the drawings defined lengths and widths. Excavation is to be done by the JCB. PCC. After the excavation, the surface is leveled. PCC poured over leveled surface. Foundation shuttering. Shuttering arrangement for foundation is to be made. Once PCC is done, shuttering for foundation is placed. It should be strong enough to withstand all types of dead and live loads. Foundation bars. Foundation bars shall be laid on the surface. Main bars and distribution bars shall place as per drawing. Column bars. Proper arrangement to be made for column bars with links as per drawings. Column steel and foundation steel to be tied properly to avoid joint cracks. Reinforcement shall be as per bar bending schedule prepared according to drawing. The reinforcement shifting and binding shall be started as soon as shuttering is completed. Reinforcement binding shall continue as shuttering work progresses. Concrete work and foundation. A foundation is a poured concrete pathway that is used to spread the weight of the building from the foundation to the soil. It is very necessary to check the levels of foundation before concrete work. Depth of foundation varies from 1.5 to 2 meters. Shuttering removal. The formwork removal procedure should be supervised by the engineer to ensure the quality of hardened concrete and structural member. That is, it should be free from or has minimum casting defects such as honeycombing, size and shape defects, etc. These defects in concrete influence the strength and stability of structure, thus immediate repair works can be done or the members can be rejected. Backfilling. Once the foundation is completed, backfill the remaining excavated area around foundation with soil. Backfill provides stability to the building. Trademark S foundation. Beam reinforcement shall be as per drawings. Top bars, bottom bars and stirrups to be placed with proper development length. Joints in the beam shuttering should be tight against leakage of cement grout.
Construction of shuttering should permit removal of various parts in desired sequences without damage to the concrete. Beam concreting. Beam is poured with concrete with grade mentioned in the drawings. The positioning of reinforcement should be properly aligned. Shuttering parts and connections should be arranged in a way that makes formwork removal easy and simple, prevents damage to concrete and formwork panels so that it can be reused without extensive repair. Slab concreting. Grade slab requires no reinforcement as it's resting on ground strata itself. Top of plinth beams and grade slab should be at the same level. Column shuttering. Column shuttering should be rigidly constructed and efficiently propped and braced both horizontally and vertically, so as to retain its shape. The shuttering should be set accurately to the desired line and levels should have plane surface. Column concreting. After the concreting of footing is complete, immediately in a day or two starters for column should be casted with proper alignment. Columns are very important members in RCC design. Wrong placing of column may affect the overall behavior of structure. Concreting of RCC columns should start from the center of vertical bars and go towards the ends. Column shuttering removal. Shuttering should not be removed until the concrete has developed sufficiently strength to support all loads placed upon it. The separation of forms should not be done by forcing. It may damage the hardened concrete. Beam reinforcement. Beam reinforcement shall be as per drawings. Slab reinforcement. Slab reinforcement shall be as per drawings. Main bars and distribution bars shall be placed as per design. Slab reinforcement should be properly anchored with beam bars. Slab shuttering. Beam bottom is first laid on the column and then slab shuttering is laid. Beam. Beam and slab levels should be maintained as per drawing. Slab concreting. After the concreting of column, beam and slab concreting shall start monolithically. The top of floor beam and slab shall be maintained as per levels. Slab shuttering removal. Special attention is required for shuttering removal of flexible members such as beams and slabs, as these members are subjected to self-load as well as live load even during construction. They may deflect if the strength gained is not sufficient to handle to loads. Shuttering should not be removed until the concrete has developed sufficiently hardness. तो नंबर 1 फ्रेंड्स, आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर मेंबर्स के रीइंफोर्समेंट कंक्रीट कवर के बारे में जरूर पता होना चाहिए। मींस किस स्ट्रक्चरल मेंबर में कितना रीइंफोर्समेंट कवर होता है। जैसे फुटिंग में 3 इंच या 75 mm, कॉलम में 40 mm, बीम में भी 40 mm, स्लैब में 20 mm और स्टेयर में भी 20 mm कवर होता है, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। सेकंड, स्टील मींस सरिये का वेट अगर केजी में कैलकुलेट करना है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे d² डिवाइड बाय 162.2, जिससे केजी में पर मीटर का वेट कैलकुलेट होगा। और थर्ड, वेट अगर फीट में कैलकुलेट करना रहेगा तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे d² डिवाइड बाय 533। ओके फ्रेंड्स। फोर्थ, हमेशा ms बार मींस एक सरिये की स्टैंडर्ड लेंथ होती है 40 फीट और 12 मीटर, ये हमेशा ध्यान रखें। फिफ्थ, यहाँ स्टील बार्स की कुछ फॉर्म है जिनमें हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, जैसे TMT जिसकी फुल फॉर्म है थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार। सिक्स्थ है TMX जिसे थर्मैक्स पावर्ड बार्स कहते हैं। सेवंथ SD जिसकी फुल फॉर्म है सुपर डक्टाइल बार्स। एट्थ HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। और नाइन्थ है CTD जो होता है कोल्ड ट्विस्टेड बार्स डिफॉर्म्ड। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप ध्यान में रखें। टेंथ है टाइप्स ऑफ स्टील। तो बेसिकली 2 टाइप्स के स्टील होते हैं। फर्स्ट है माइल्ड स्टील जिसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 250 न्यूटन पर mm² होती है,
और सेकंड है HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, जिसमें भी दो टाइप्स के बार आते हैं। पहला FE 415 जिसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 415 न्यूटन पर mm² है, और दूसरा FE 500 जिसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 500 न्यूटन पर mm² होती है। ओके फ्रेंड्स, 11th है कि एक स्क्वायर शेप कॉलम में कम से कम 4 नंबर ऑफ बार होने चाहिए, और 12th एक राउंड शेप कॉलम में कम से कम 6 बार होने चाहिए, यह भी आप ध्यान रखें। 13th 1 टन सरिये की बाइंडिंग के लिए लगभग 8 से 12 kg बाइंडिंग बार रिक्वायर होती है, यह पॉइंट भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है। 14th जो MS बार आप चेयर बनाने के लिए यूज करते हैं वह कभी भी 12 mm डाया से कम नहीं होना चाहिए। 15th चेयर, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिंग 1 मीटर तक ही होती है। ओके फ्रेंड्स, ये भी आप ध्यान में रखें। 16th पॉइंट ये है कि स्लैब में मिनिमम डाया ऑफ बार 8 mm का होता है और कॉलम में 12 mm का, इससे कम डाया के बार यूज नहीं करने चाहिए। 18th जो डॉल बार है उसका डाया कम से कम 12 mm होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखें। 19th स्लैब में मैक्सिमम बार डाया उसकी थिकनेस के 1/8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20th कॉलम में मिनिमम स्टील परसेंटेज इसके ग्रोस एरिया का 0.8% और मैक्सिमम 6% ही होता है, ये बात भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट, जो कॉलम में ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट होती है उसे तो टाइज कहते हैं, और बीम की ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट को स्टीरअप्स कहते हैं। 24th हमसे कई बार यह भी पूछा जाता है कि रीइंफोर्समेंट में कवर ब्लॉक्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपको बता दूं तो सबसे पहले तो रिबार्स और शटरिंग के बीच में एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, सेकंड स्टील रीइंफोर्समेंट को कोरोजन से बचाने के लिए, और थर्ड इसे थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखना। 25th टेंशन जोन में तो लैपिंग 50D से 60D तक होती है, जिसमें D है डाया ऑफ बार, और कंप्रेशन जोन में लैपिंग होती है 24D, ये भी आपको हमेशा याद होना चाहिए। 27th है कि बीम में नंबर ऑफ स्टीरअप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है क्लियर स्पैन डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस 1। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मिनिमम हुक लेंथ ऑफ स्टीरअप्स होती है 9D और 90 mm। नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन। आपने डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन का नाम तो अक्सर सुना ही होगा, तो जो डिफ्लेक्शन होती है वह टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट होती है और डिफॉर्मेशन परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि हम सिर्फ स्टील को ही एज ए रीइंफोर्समेंट क्यों यूज कर सकते हैं, तो इसका सीधा सा एक ही जवाब है, बिकॉज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इस पर मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है स्टीरअप्स या रिंग का जो हुक होता है उसका एंगल हमेशा 135 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट, कभी भी 36 mm से ज़्यादा डाया के बार से लैपिंग नहीं की जाती, अगर जरूरत हो तो वेल्डिंग प्रेफर की जाती है। ओके फ्रेंड्स, और कभी भी टेंशन जोन में लैपिंग नहीं करनी चाहिए, ये बात भी आप ध्यान रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट, पहला तो लॉन्गिट्यूडिनल बार हमेशा 90 डिग्री पर बैंड होने चाहिए, और दूसरा बैंड लेंथ 18 इंच या 1.5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, कभी भी एक जोन में 50% से ज़्यादा बार लैपिंग नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट, हुक की लेंथ कभी भी 12D से कम नहीं होती है, जिसमें D होता है हमारा डाया ऑफ बार। 39th पॉइंट है यंग मॉडुलस ऑफ स्टील FS, जो होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ये भी आप हमेशा ध्यान रखें। ओके फ्रेंड्स, और 40th पॉइंट है कि रीइंफोर्समेंट की स्ट्रेंथ कभी भी इसकी डेजिग्नेटेड स्ट्रेंथ से 15% से कम नहीं होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स,